guest today is a beautiful human being and as talkative as me. She has a Facebook page which runs as Guftagu with Monica. So you all know how much she loves to chat. Not only does she love to talk, but she also loves to listen to people and their challenges and offers counsel. She qualified herself in Masters in Counseling to understand if thoughts not regulated well can lead to physical symptoms like disease. Please welcome this multifaceted personality, my medico friend Monica Jain. Welcome to Sunny Side Up and welcome to my home. Thank you so much for dropping in and joining me today in this conversation. Thank you so much, Sunita. Pleasure is all mine. It is always so wonderful to connect with you. So I'm honored to be here with you today. What I want to cover today is this very interesting career journey that you've been through in this last decade or so. Are you game for it? Yes, I am. Basically, it's a journey. Mm-hmm. It's a very self-explanatory journey. Because when I did medicine, I had no idea that, I don't want to be a doctor. It was like, because back then in 90s, it was like a familial profession. And because my parents are doctors, so I landed up being a doctor. And after, I just got married, immediately after my undergrad, after my MBBS. So, but then I didn't want to do my post-graduation. I asked my husband, is it okay? He said, yeah, fine, just be happy. So that was something very new for me, that you don't have to pursue a career and you just have to be happy. So I was like, okay. Then, he said, okay, fine. After my daughter was born, then I was like, okay, no, I can't sit home. So I have to work something. So he said, okay, fine. I mean, he went to London for a year. And that was a time when I went and stayed with my parents in Meerut, because they have their own nursing home and everything there. And he said, you can sit with mom and learn a little GP and that'll be okay. It'll be like you can manage the family life and the work life. Best of both the worlds. And I don't know, I was always very scared to do a GP because I thought, no, I can't give medicine to anyone. What if I give some wrong medicine? So, because in Meerut, my parents have been practicing since long. So I went to an ultrasound center, diagnostic center, and I stood there in ultrasound. I was like, wow, I'd love that, to see the babies and many more problems. It was nice to see the body internally. And I landed up being an ultrasonologist. So back from Meerut and what happened in Delhi? So then it was nice. Rather, his one relative only, he gave me a break and it was just go for 2 hours. And I was very happy. Wow, only 2 hours working, you get both enjoying, both the worlds. And then somehow it picked up. And my stars, they were like such that I opened a clinic in 2 years. Wow. And I always had that complex, right? I'm not an MD radio. But then people were very happy with my work. And they said, we know you, we relate with you. And it doesn't matter to us. So that was a really, a very morale boosting factor for me. Motivating factor for me. That, people, they recognize the talents and they see your work and not your degree. So, which was very good. And then I worked nicely for 18 years. So, बच्चे तो बड़े हो गए इस पूरे दौरान. So 2015 के करीब, like of course with that teenage, my elder one was a teenager. So something happened and we had clashes and all. I was like, yaar, apni mama ke sath to meri badi achhi relationship thi. What's happening? And then I was like, okay, I have to work on myself. So then I took some self-development programs, and I was like, I had to understand this mind better. And I just went and joined Masters. It was a hybrid program, and I did Masters in Counseling. And though I was a little nervous because my batchmates were all teen, like, early 20s, 25, and I was already 40 plus. I was like, okay, can I study at this age? But then it was good. It was nice, writing papers again, theories, practicals, it was good. And then my husband was offered a transfer. And I
was like, wow, let us just jump at it. And he was like, with your career and all. And I was like, no. Because I think my heart had already left that ultrasounds. And I wanted to understand the, mind much more in a beautiful way. Because during my practice, I always saw that patients, they didn't have any pathological problems. Most of the problems were psychosomatic. So, I mean, they were like, क्या निकला अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, so I didn't have any answer to their queries क्योंकि कुछ होता ही नहीं था. And when I used to offbeat just talk to them, and it was some either childhood rooted causes or some issues, family issues, relationship issues, because of which they trapped their emotions and which it portrayed as a physical problem. तो फिर ये हुआ कि भाई काउंसलिंग देखते हैं क्या है. तो along with my work I did counseling, and when we moved to Singapore, so it was lovely there, and I was looking for something better, what to do, and I had a lot of time on my hand, so I went and did yoga instructor course. योगा कैसे आया लाइफ में? तो एक्चुअली ये शायद कहीं बचपन में डीप रूटेड था, बिकॉज आई एम फ्रॉम एन आर्य समाजी बैकग्राउंड, एंड माय ग्रैंडफादर वी यूज्ड टू डू यज्ञास एट होम. तो हम लोग को बहुत बचपन से ही गायत्री मंत्र, श्लोकास वो खुद सिखाते थे. तो शायद वो कहीं and I have as a child I have read many books of Swami Vivekanand, and जब वो योगा सीखा ना तो एक तरीके से मेरी उस क्यों को एक साइंटिफिक अप्रोच मिल गई. Because SVASA, जहाँ से मैंने करा, there's a branch in Singapore, and it's a big research institute in Bangalore. So जहाँ पर योगा पे research होती है, how it is used in anxiety, stress, depression. So they research. There's a proper research how the asanas they help in solving all these problems. So there's a science behind all these asanas, right? Yes, yes. So it was beautiful learning, what comes, in what sequence should you do yogas, pranayams, and breathing techniques. So it is not random. Everything is related. And I met someone in the yoga institute itself. So she is working since last 10 years as a yoga trainer and yoga therapist. So I just proposed her, let's do a workshop together. So it was a 2 days workshop. So one day we had children, and it was like 8 to 12 years. And the other day was a Mother's Day. And it was so beautiful, they made those emotional wheels and everything, and children, their experience and then the mother's experience was so good. Even mothers felt so happy. They were like, we had such lovely feedback, but mother said, oh, I forgot that my emotions are so colorful. हम बड़े होते हैं ना, हम अपना बचपन भूल जाते हैं, but then it is very important to keep that inner child alive. 2020, I mean, it is not new. Everybody suffered, everybody was cooped in, and of course even I had my lows of what to do. And then actually my children, they helped me. They said, okay mama, आपका एक channel बनाते हैं. And then they opened that Guftagu with Monica. They curated a website, and actually then later I opened a page in 2021, and because this all started at the end of 2020, so it was I didn't know how to go about, and then after that page happened, I started posting on relationship, and then I did workshops on relationships, and relationship was basically parenting, couple, and with parents, because these are like very close relationships, and if we are good in them, then we can excel at anywhere. Absolutely. And I feel what we are is what we were in our childhood. So if we focus and remove the root causes of our issues in the childhood, then everybody will be happy. Okay. So that's how it started. Yes. So yoga led you to these workshops. Yeah. No, or COVID led you to Guftagu page. Yeah, sort of, because I never knew that I was already a work in progress, and that progress got a shape. So in my workshops, because I have that medical background, so I try to
incorporate the medical knowledge, the yoga knowledge, the counseling knowledge, everything together. Because I feel if I understand why it is something is wrong with me and what is the root cause for it, I can manage it better. Because it always happens, right? If you have an answer to your why, you can work on it. एक्शन खाली थॉट पर नहीं होगा, जब हम उस थॉट को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम उस पर एक्ट कर पाएंगे. सो देन आई स्टार्टेड मीटिंग विद पीपल एंड okay, let's put a workshop. Then I did as a faculty, as a resource person, I took a lecture for second year students in DU also. Okay. Yeah. Because and it was like promoting well-being, because the well-being is very important. Yeah. And then moreover, I broke the topic in different types of work, like spiritual, mental, social, emotional, professional, because all those are part of us. You cannot be physically fit but mentally suffering. True. So that was a thing, like I had different scoring systems in those workshops regarding on the first I introduced people to what are the types of well-being, because हमें पता भी नहीं होता ना कि हमारा वेलबींग क्या है. हमें लगता है कि फिजिकली फिट है तो हम वेल हैं, ऐसा नहीं होता. इट्स लाइक लेयर्स ऑफ अनियन. आप पील करो तो आपको अंदर पता चलता है कितना कुछ है जो हमें भी नहीं पता. सो इट वाज इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. देन स्कोरिंग, पता नहीं चलता ना हम कहाँ हैं जब तक कि हमें मार्क्स नहीं मिलते. वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स आर इम्पोर्टेंट. हमारी ट्रेनिंग वैसी ही हुई है ना, 30 आए तो अच्छा है, 2 आए तो बुरा है. तो वो वैसी स्कोर कार्ड था कि जहाँ पर सब लोगों ने पार्टिसिपेंट्स ने अपने आप को स्कोर किया एंड दे रियली लव्ड इट. उनका फीडबैक यही था. हमसे हमने पूछा कि आपको वर्कशॉप में बेस्ट क्या लगा, तो सब लोग बोले मैम स्कोरिंग बहुत अच्छा था. क्योंकि उससे ना एक अवेयरनेस है. बिकॉज अगर आप अवेयर ही नहीं हो तो आप वर्क किस पर, कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. एब्सोल्युटली. तो फिर वो अवेयर था. फिर कॉन्सिक्वेंसेस थे कि वेलबींग कॉम्प्रोमाइज होने से क्या होता है. सो एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन, ये सब होता है. फिर उसके बाद हमने उसको बताया कि वो कैसे आप उसको योगा से मैनेज कर सकते हो. मतलब दवाई खाना जरूरी नहीं है. Until see medicine now, me being a doctor and telling you no, don't take the medicine, but that is important because medicine is the last resort. आप पहले उसको अगर ऐसे ही टॉक थेरेपी से या किसी चीज़ से वेंट आउट कर कर आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम, तो इट इज ऑलवेज बेटर. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अब मैं फॉर ऑल योर व्यूअर्स कि एंगर इज नॉट बैड. यूजली ये होता है कि ये गुस्सा करता है ये ना, ये अच्छा नहीं है. गुस्सा करना बुरी बात है. हम बचपन से यही सुनते हुए बड़े हुए हैं, गुस्सा मत करो, गुस्सा करना बुरी बात होती है. It is also an emotion, and most important is it is just a secondary emotion. It is not a primary emotion. एक iceberg होता है पूरा anger के नीचे. You are not just angry. Anger can be due to irritation. You are upset. You are annoyed. You are frustrated. आप सोचिएगा कभी कि आपको गुस्सा क्यों आया. ऐसे तो नहीं गुस्सा होने लगे. पहले कुछ इरिटेशन हुई होगी, तब वो एंगर में बदली. जब वो इकट्ठा होता गया, एक ट्रिगर फैक्टर आपका, तब आप गुस्सा हुए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर इज योर एंगर कमिंग फ्रॉम. एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट, यू कैन हैंडल एंड यू कैन मैनेज योर एंगर वेरी वेल. और सारे एंगर बुरे नहीं हैं, बल्कि डेलिबरेट एंगर और मॉरल एंगर तो अच्छे हैं. अच्छा. एक मूवी आई थी ना अपनी माउंटेन मैन, दशरथ मांझी कर, रिमेम्बर. हाँ, तो वो यही तो थी, गुस्सा ही तो था. फिर उनकी वाइफ को टाइम पर मेडिकल सपोर्ट नहीं मिला, तो उन्होंने गुस्से में सुरंग ही बना दी. 22 साल वो इंसान लगा रहा, तो क्या था. सो दैट वाज अ गुड एंगर, है ना. आप देखिए जहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो एंगर इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल. आप देखिए जितने बड़े बड़े लोग हैं तो उनको किसी ना किसी बात पर बुरा लगा और उनको अपनी आवाज, दे वर नॉट एबल टू फाइंड देयर वे आउट, देयर लेट आउट इन द नॉर्मल रेगुलर
worldly norms. So then they got angry and they was let me create my own path. So isn't that anger good? Yeah, correct. So anger को बाहर आने दो. सारे इमोशंस को बाहर आने दो, लेकिन माइंडफुल रहो कि वो कैसे बाहर आ रहा है. यू कैन रेगुलेट योर एंगर. अगर वो गुड आ रहा है, आपके जैसे कि कंपनीज होती है कॉर्पोरेट्स, उसमें वो लोग एंगर को यूज करते हैं. आप देखिए वो मूवी आई थी चक दे, उसमें क्या किया, एंगर को यूज करके कहाँ वो मैच जीत गए. राइट. 83 का वर्ल्ड कप देखिए, टीम को गुस्सा आया, उसने गुस्से में वर्ल्ड कप जीत लिया. Wasn't that anger? Yeah, absolutely. Yeah. Right? Yeah. So make your anger useful. Do not be used by your anger. That's the point. हाँ. तो इसमें हमने ऐसे था स्टेप 1 में टाइप्स ऑफ एंगर बताए, फिर उसकी क्यूज बताए, जैसे साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, फिजिकली आप अपने एंगर को कैसे पता कर सकते हैं कि ओके यू आर गेटिंग एंग्री, एंड देन यू कैन यूज इट प्रोडक्टिवली. फिर टाइप्स ऑफ एंगर में वैसे हमने अभी डिस्कस करा. फिर हमने स्टेप 2 में आपको बताया कि एंगर से अवेयर आप कैसे होगे, कि कई बार क्या होता है हमारी ब्लाइंड स्पॉट होती है, हमें पता ही नहीं चलता. लोग कहते हैं गुस्सा क्यों हो रहे हैं, गुस्सा हम कहाँ गुस्सा हो रहे हैं. सो आई मीन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट. समटाइम्स you're not ready to accept that you are angry. Then फिर step 3 था the goals. मतलब you have to score for yourself. अगेन यहाँ पे फिर से नंबर की बात आ गई है ना. तो आपने स्कोर किया एंड देन आपने अपने गोल सेट किए, एंड गोल वर लाइक स्मार्ट गोल्स, कि भाई ऐसे ऐसे नहीं. स्मार्ट इज लाइक अगेन द स्पेसिफिक, दे आर मेजरेबल, देन दे आर रियलिस्टिक, दे आर टाइम बाउंड एंड अचीवेबल. राइट. क्योंकि अगर हम अपने लिए एक इतना अनअचीवेबल गोल सेट कर लेंगे तो वो हम टारगेट कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. तो इसलिए आप छोटा छोटा ब्रेक करो. तो उसमें हमने वो एक्सप्लेन करा लोगों को कि आप कैसे करोगे. देन हमने उनको टूल्स दिए. पहले हमने उनको स्ट्रैटेजी प्लान करी स्टेप 4 में, बिकॉज बिना स्ट्रैटेजी के तो कुछ भी नहीं होगा ना. एंगर भी कैसे मैनेज होगा. तो फिर हमने उनको स्ट्रैटेजीज बताई. फिर हमने उनको टूल्स दिए स्टेप 5 में, कि ये सब इतने टूल्स हैं ना, एवरीथिंग वर्क फॉर डिफरेंट पीपल. फॉर सम दे फील ब्लिसफुल इन मेडिटेशन, फॉर सम मेडिटेशन कैन बी अ पनिशमेंट. कहाँ बिठा दिया मुझे आंख बंद कर कर ऐसे, उनको नहीं समझ में आता है. तो इट्स ओके, सी व्हाट वर्क्स फॉर यू, उस कोपिंग स्किल्स. एंड देन 6th में हमने उनको एक रोड मैप दिया उनके एक्शन प्लान करने के, बिकॉज आप जब तक एक्शन नहीं लोगे कुछ भी नहीं होगा. सो एक इजी रोड मैप बनाया, उनको फैसिलिटेट किया कि वो कैसे अपना खुद का रोड मैप बनाए और खुद का एक्शन प्लान बनाए. एंड फिर हमने उनको थोड़े जर्नल्स वगैरह उनको दिए कि आप इस पे वर्क करो, एवरी डे आपको वर्क करना पड़ेगा. राइट. बिकॉज इट इज़ नॉट कि जादू की छड़ी कि घुमाई और ख़त्म हो गया. तो अगर आप 2 मिलीमीटर्स भी चेंज रोज क्रिएट करते हो अपने लिए, तो आप एक हफ्ते बाद देखोगे तो आप 14 मिलीमीटर आ गए. एंड दैट इज सम चेंज विच विल मोटिवेट यू. सो कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, ये सब इम्पोर्टेंट है. हम फैसिलिटेट ही कर सकते हैं. मैं ये सोच रही थी कि मे बी यू कैन जस्ट गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हमारी एंगर का जो लेवल है फ्रॉम 1 to 6 कैसे हम गए. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मे बी यू कैन जस्ट शेयर दैट विद मी. या श्योर. सो अभी लेवल मैं आपको एक नॉर्मल जो हमारा डे टू डे होता है, एंड मे बी मेनी मदर्स कैन रिलेट विद दैट एग्जाम्पल. तो एक मम्मी अपने काम से ऑफिस से आई. सो शी वाज एट लेवल 1. शी वाज टायर्ड बट देन शी वाज काम. हर बॉडी वाज रिलैक्स्ड. आराम से पता चल रहा है वो आई है खुशी खुशी घर के. चलो अब अपने बच्चों से मिलती है. शी स्ट्रेट अवे शी गोज टू चिल्ड्रंस रूम एंड वो देखती सब फैला हुआ है, सब गंदा है. एंड उसको पता भी नहीं चलता, धीरे से यहाँ की मसल्स टॉट हो गई. ओके. ठीक है. एंड थोड़ा सा आईब्रोज ऊपर चली गई. एंड शी ट्राइड टू स्माइल बट देन बॉडी टोन चेंज हो चुकी है. एंड दैट इज लेवल 2. आप ऑलरेडी लेवल 2 पे हो गए हैं. एंड आप देखते हैं एंड बच्चे हा हंस रहे हैं, गंदा पड़ा हुआ है. एंड आप थोड़ा सा कर बच्चे देखते हैं एंड यू लाइक हेलो आई एम बैक, एंड आप वहाँ से निकल जाते हैं. क्योंकि अगर आप वहाँ खड़े रहोगे
तो आपका लेवल ऑफ एंगर और बढ़ता रहेगा, जो कि ऑलरेडी बढ़ चुका है, आपने रियलाइज नहीं करा है, लेकिन आपकी बॉडी टोन चेंज हो गई है और आप बाहर आते हो एंड देन आप नोटिस करते हो कि ये तो ड्राइंग रूम में बिखरा पड़ा है एंड देन यू आर ऑलरेडी एट लेवल 3 क्योंकि आपके रास्ते में जो आया आपने उसको किक कर दिया, यू वर माइंडफुल, थोड़ा सा दिमाग आपका चल रहा था लेकिन आप एक स्टेज ऊपर चढ़ चुके हो। आपने क्योंकि जो किक किया आपने ऐसे किक किया कि कहीं कुछ डैमेज ना हो, लेकिन वो हो गई एंड देन आपके दिमाग में थॉट आ गया कैसे बच्चे हैं और इतना तो करो सबके लिए, फिर भी कोई घर में ध्यान नहीं देता है, इतना गंदा घर पड़ा रहता है और मैं कितना काम करूं और मैं थक गई हूं और आपने ऑलरेडी आप लेवल 4 क्रॉस कर चुके हो। आप देखिए ना आपकी बॉडी टोन, क्योंकि आपने ऑलरेडी किक भी कर दिया, सो आप यू आर ऑलरेडी एट दैट फ्रस्ट्रेटेड लेवल, राइट। आपके दिमाग में ये थॉट आ गया है कि मैं थक कर आई हूँ और घर इतना गंदा है, कितने इर्रेस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, गंदा करा हुआ है, ठीक है। अब इतनी देर में आपके हस्बैंड का फोन आता है, वो बड़े प्यार से, उनको तो नहीं पता कि क्या चल रहा है, उन्होंने जस्ट कॉल करा और बोला कि हेलो डार्लिंग, आज ना मेरे फ्रेंड्स के साथ डिनर है और मैं घर पे डिनर नहीं करूंगा, बस हो गया। यू आर ऑलरेडी एट लेवल 5 बिकॉज यू स्टार्ट शाउटिंग ऑन द फोन, यू आर सो इनसेंसिटिव, यू आर सो सेल्फिश, मैं ही घर पे रहूं, मैं ही सब काम करूं, मैं ही बच्चों को देखूं, घर का भी देखूं, बाहर का भी देखूं, मुझे क्या समझ रख, मुझे नहीं रहना है, यू पीपल डोंट केयर फॉर मी, आई विल लीव दिस होम, आई विल लीव योर चिल्ड्रन, आई विल गो, एंड यू स्टार्ट शाउटिंग। मतलब और ये कब हुआ पता भी नहीं चला, राइट। एंड आप चिल्लाते हो और बच्चों को आवाज लगाते हो नीचे आओ, एंड दे कम डाउन एंड दे आर कंफ्यूज्ड, क्या हुआ, अभी तो मम्मी आकर हंस रही थी और ये एकदम से क्या है, एंड देन यू स्टार्ट शाउटिंग एंड तुम लोग समझते नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं पूरा दिन काम करती हूँ, अब बस यही बचा है, तुम्हें पता है कि थोड़ा तो साफ कर लेते, इतने बड़े हो गए हो, आप ऑलरेडी लेवल 6 पर पहुंच चुके हो और इतना गुस्सा हो कि आप अपना फिस्ट टेबल पे मारने लग जाते हो एंड यू नो यू आर वेरी एंग्री एंड यू आर ऑलरेडी डिगिंग योर नेल्स अपने पाम में एंड आप गुस्सा हो बहुत एंड देन यू ब्रेक डाउन एंड यू आर लाइक, आप रोने लग जाते हो एंड यू आर एक्सॉस्टेड। आपने देखा, आपको पता चला आप लेवल 1 से कैसे लेवल 5 पर पहुंच गए। That is anger. Yeah, so this is what you're teaching people to control. Yes, to regulate. See, because क्या होता है, हम वही जो इनिशियल स्टेजेस होती है ना, क्यूज, फिजिकल एंड मेंटल क्यूज, मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा टेंस हो गया, बॉडी टोन थोड़ी ऐसी हो गई और यू नो थोड़ा रेडनेस आपको अपने आप को फील हो जाएगा, राइट। व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग एंग्री यू स्टार्ट फीलिंग दैट योर स्किन इज गेटिंग वार्मर, राइट। एंड कोई दूसरा भी आपको कह देगा अरे तू गुस्से में लाल क्यों हो रहा है, तो यू आर लाइक मोर एंग्री। सो पीपल कैन आल्सो गिव अस क्यू, एंड अगर आप थोड़ा सा माइंडफुल होंगे सो यू कैन पिक दीज क्यूज इन द इनिशियल स्टेजेस एट level 1 and level 2 so that you don't progress on to that level 6. See, because nobody gains, even you feel bad after you are angry, even you feel bad. Of course वो माँ भी उसके बाद रोने ही लग गई ना, एंड उसको भी बुरा लगा कि मैंने अपने बच्चों को डांटा, मैंने अपने हस्बैंड पर क्यों चिल्लाया, फिर वो और गिल्ट मोड में चली, देन शी फील मोर सैड। सो मतलब एक इमोशन कहाँ से चलता चलता कहाँ पहुँच जाता है आपको पता नहीं चलता। So but then it was a beautiful workshop, it was lovely working with you. It's amazing how you have just explained the levels of the anger that we all experience, I think nearly on a daily basis. This is amazing. Monica, एक question मेरा अभी भी रह गया है, and that is, you know, all this learning of the past 20-25 years that you've had, right from, you know, managing the body and now moving on to managing the mind and the entire human as a whole. So just tell me if you can share any mantra of staying positive in this time. Okay, so see, it's a vicious cycle, like mind, body and soul all together. So best is stay fit, because once you feel good, your mind will have, your thoughts will be positive, right? And if your mind is positive, then you will behave positively with people. Moment you behave positively with people, people will also be positively with you, and then you will feel physically also nice, right? Because हम तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए, so we are looking good, right? So if you're looking good, you feel good, and if you feel good, you will behave good.
And once you behave good, people will also come and talk to you. And once they talk to you, you will feel more good. तो वो एक साइकिल हो जाता है, राइट? हमें लगता है कि अच्छा हम चलो तैयार होकर चलते हैं, and you know एक you have to pamper yourself. So I think physically that's the best way to get into the cycle. Moment you start working on yourself physically, वो feel good factor अपने आप आ जाता है, and you can be positive. और ये थी मेरी गुफ्तगू with Monica. She says life is like a mandala art. It looks complicated, but in reality it is not. We can make it beautiful by being calm and slowly creating it as we like it with colors of our choice. Another quote of hers that I love is on how to live life. Monica says, in a forward progression and never in a backward regression. Past is with no return. Future is your turn. Understand the signs and live 100%. Until next Sunday, look up at sunny side up.